का कहना है कि स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द सब्जेक्ट, मतलब स्टिक टू माधुरी कदम्बिनी। लेकिन मेरा दूसरे फ्रेंड कमल रॉय का कहना है कि आज गुरुदेव का तिरुभाव है, तो गुरुदेव के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताओ। कहना है कि स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द सब्जेक्ट। तो गुरुदेव का पॉइंट बताने का मतलब कि मैं गुरु तत्व में बोलूं, और माधुरी कदम्बिनी का जो टॉपिक चल रहा है इस समय, वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्या? टॉपिक अनर्थ निवृत्ति। कल जो हमने डिस्कस किया था, ये है अनर्थ निवृत्ति, 4 प्रकार के अनर्थ तथा उनका विवरण। अब अनर्थ निवृत्ति एक समुद्र है, अथाह समुद्र है। तो अनर्थ निवृत्ति को समझने के लिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो गुरु तत्व की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अनलेस वी टॉक अबाउट गुरु तत्व वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ कैन वी ओवरकम दिस अनर्थ निवृत्ति। कारण क्या है? इट वेरी सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल है कि यही नंद तनुज किंकिरम अत तमाम विश्व में भगवान बुधो कृपया तम पाद पंकज स्थित दुरी सदृशम विचिंतया। या फिर हम लोग बोलते हैं हर भजन के अंदर, भव सागर से पार लगा दो गुरुदेव, भव सागर से पार लगा दो। क्योंकि समुद्र एक ऐसी चीज है जिसको तैर के कभी पार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? समुद्र में तैरते रहते, तैरते रहते, तैरते रहते, तैरते रहते हैं, और तैरते 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 जब हमारे ऊपर भगवान की हेतु की कृपा होती है तो क्या होता है? एक नाव आ जाती है, वो नाव हमको लेके बिठा लेती है। जितनी भी मूवीज मैंने आज से देखी है, चाहे कास्ट अवे हो या कोई भी पुरानी मूवीज हो जिसके अंदर पीपल गेट स्टक इन द ओशन एंड दे डोंट नो वेयर टू गो, चाहे वो लाइफ ऑफ पाई हो कितनी मूवीज आई आज तक, कितनी स्टोरीज सुनी, उन सब स्टोरीज में ये सिमिलैरिटी है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे गिव अप एंड व्हाट हैपेंस somebody comes and rescue them। तो जो अनर्थ निवृत्ति का समुद्र है, उस अनर्थ निवृत्ति के समुद्र को पार करना भी बहुत कठिन और बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हालांकि हम बोलते हैं इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बट अनर्थ निवृत्ति के समुद्र को पार करना नामुमकिन है। ये एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति के समुद्र को पार करना आसान जब होता है जब गुरु की मर्जी आती है, कृपा आती है, और गुरु हमें भवसागर से पार करवा देते हैं, है ना। तो आई बहुत फॉर्चुनेट, बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज जो है श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्रीला गुरुदेव का तिरुभाव दिवस है। उन्होंने आज ही कितनी शरीर छोड़ा था। आज मुकुल प्रभु ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गुरुदेव के बारे में। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू आर द डिसाइपल ऑफ श्रीला गुरुदेव, वुड यू लाइक टू से समथिंग? देन मुझे लगा कि हाँ, व्हाई नॉट। क्योंकि 3-4 दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ था कि मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा था, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभैया बहांतरा शुचि। तो हम बोलते हैं यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, यानी भगवान के पुंडरीकाक्ष आंखों का जो हम स्मरण करते हैं, so we get purified internally and externally both। तो मैंने बताया उनको कि 2008 या 9 में जब मैंने महाराज जी महाराज के लेक्चर सुनने शुरू करे थे, तो एक लेक्चर था गुरु तत्व के ऊपर।
उसमें पहले लेक्चर का पहला वर्ड था एक स्टेटमेंट थी। तो संस्कृत में एक शब्द होता है धातु। धातु मतलब जैसे कृष है। अब कृष से ही कृषि, कृष्णा, कृषक, संकर्षण, ये सब वर्ड बने हैं। तो कृष संस्कृत का शब्द नहीं है, संस्कृत की धातु है। धातु से अलग अलग चीजों का ओरिजिनेशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, एक पूरी कहानी हमें सुननी पड़ती है। पूरी कहानी, पूरी कहानी सुनने के बाद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन कोई बोलता है, वो लाइन हमको इतना झंझोड़ देती है कि our life gets completely changed. So when I started listening to those classes, so ये जो पहली लाइन थी उस लेक्चर की, गुरु तत्व के जो लेक्चर थे उनके, गुरु इज अ टेंजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। उन्होंने जैसी ये बात बोली, इस पर्टिकुलर चीज ने मुझे आज तक गुरु तत्व के ऊपर पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी। कैसे क्लियर करी बताऊंगा आपको। कि मान ली महाराज ने बोला गुरु इज द टेंजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। तो ये जो स्टेटमेंट है टेंजिबल मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब क्या है? टेंजिबल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि ऐसी कोई चीज जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल। इनटेंजिबल मींस समथिंग व्हिच वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट फील। वी कैन नॉट फील कृष्णा unless we are very advanced. We cannot touch him, we cannot see him unless we are really advanced. So Guru is a tangible manifestation of Krishna, means Krishna cannot be seen easily. That's why he reveals or he expands himself in the form of Guru. और जब गुरु हमारे सामने आते हैं तो गुरु क्या है? अब भगवान के चरण है, वो हमको शेल्टर देते हैं। तो अगर टेंजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा है तो जो गुरु की शरण है वो भगवान के लोटस चरण है। अगर गुरु हमें शरणागति देते हैं अपनी, तो बिकॉज इज गिविंग शेल्टर, तो कृष्णा गिव शेल्टर अंडर द लोटस फीट ऑफ ऑफ हिम। अगर भगवान का हाथ है, जो हथेली है, वो हमारे सर पे आती है, तो इस तरीके में आशीर्वाद। सो द ब्लेसिंग्स ऑफ द लोटस हैंड कृष्ण जो है, जिनके हाथ भगवान के लोटस जैसे हैं, या फिर भगवान के जो 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 स्नेह है, जो प्रेम है, वो भी गुरुदेव ही, राइट। सो उसी तरीके से भगवान के जो मर्सीफुल ग्लेंस है, यानी कि जो करुणामय दृष्टि है, वो भी गुरु ही है ना। गुरु कैन बी कंपेयर टू द करुणामयी दृष्टि ऑफ कृष्णा। करुणामयी मतलब जब करुणा होती है ना किसी के अंदर, तो फिर आप आदमी के कोई दोष नहीं देखते हैं, उस व्यक्ति के अंदर क्या फॉल्ट्स है, यू डोंट सी द फॉल्ट्स, you do not see any adoshadarshi. Chaitanya Mahaprabhu was adoshadarshi. One of the name of Chaitanya Mahaprabhu is he was adoshadarshi. So करुणा में क्या होता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया क्या नहीं किया, तुम उसकी बस पिटी सिचुएशन को देखते हो, वो बोलते हो लेट मी हेल्प हिम, लेट मी हेल्प हिम। सो द करुणामयी जो ग्लेंसेस हैं कृष्ण की, वो क्या है? श्रीला गुरुदेव। So when Krishna has compassion on us in the form of his merciful glances, या कृपामयी दृष्टि के माध्यम से, दृष्टि की जगह वो हमारे पास श्रीला गुरुदेव भेजते हैं।
यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम. So when you're thinking about पुंडरीकाक्ष, सभाया महंतर शुचि. So गुरु जो भगवान की मर्सीफुल ग्लेंस है, जब हम गुरु का स्मरण करते हैं, जब गुरु की आंखें हम पे पड़ती हैं, गुरु हम पे जब हमें दृष्टि डालते हैं अपनी करुणामयी, तो हम दोनों तरीके से प्यूरिफाई होते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. एक्सटर्नली क्या होता है कि गुरु हमको क्या देते हैं? एसोसिएशन ऑफ वैष्णवास. गुरु हमें क्या देते हैं? सर्विसेज टू एंगेज अवर बॉडी. गुरु हमको क्या देते हैं? क्या सेवा वृत्ति, opportunities to serve, Vaishnav Sangh, his books, you know, and and conducive environment, temple. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जो बाह्य बहंतर शुचि है, तो बाहर की जो शुद्धि होती है वो हमारी ऐसी हो जाती है. कैसे हो जाती है? यहाँ पे हम लोग मंदिर जाना शुरू कर देते हैं. गुरुदेव ने मंदिर दिया तो मंदिर जाना शुरू कर दिया. ठीक है, फिर गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने हमको एसोसिएशन दी तो सेवा करनी शुरू कर दी. अब जब भक्तों से अटैचमेंट हुई तो ऑटोमेटिकली भौतिक जगह से अटैचमेंट खत्म हो जाती है, राइट? लूजेस अवर अटैचमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, and slowly but surely we develop more and more love for Srila Gurudev, and externally we become completely cured. Then he gives us Diksha Mantra, and after giving us Diksha Mantra, of course he gives us only first Harinam, but then he gives us Diksha Mantra. And after that, through his lectures and through his instructions, he reveals the Divya Gyan in our heart. And Guru reveals his heart to us. So when he is giving what? Divya Gyan to us, we become internally purified also. By chanting that mantra, by chanting those Gayatris, by chanting the holy name of the Lord, by meditating on the pastimes of Krishna. You getting your point? Sabhaya Bahantara Shuchi. वैसे ही जैसे भक्ति की धारा है, अब भक्ति की जो धारा है बहुत प्यूरिफाइड धारा है यार. जमुना कभी कंटेमिनेट होना होती है, यानी कि जमुना अशुद्ध नहीं होती है, लेकिन जमुना पॉल्यूटेड हो सकती है. पॉल्यूटेड मतलब एक्सटर्नली गंदी. तो उसमें क्या होता है, जितने भी मेटेरियलिस्टिक लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जितना भी हैजर्ड्स होते हैं या फिर जितना भी फैक्ट्री वेस्ट, the ammunition waste, they all throw everything into the river. Then we as a devotee sometimes go to Yamuna and create so much of pollution environment there by throwing plastic sometime in Yamuna, by throwing things inside Yamuna, especially things which actually make Yamuna more dirty. So same way, लेकिन यमुना कभी अशुद्ध नहीं होती है. तो सेम वे भक्ति की जो धारा है वो बहुत प्यूरिफाइड धारा है, बिल्कुल क्लीन है वो. लेकिन क्या है ना कि उसके ऊपर कभी किसी एक्सटर्नली बहुत सारे लोगों का अटैक होता है. भौतिकवादी लोग कहते हैं कि अरे यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेवकूफ बना रही है लोगों को, उनका ब्रेन वॉश कर रही है. तो दूसरे संप्रदाय के आगे लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, कभी शंकराचार्य बोल रहा है कुछ, कभी बाबा जी लोग आगे कहते हैं कि स्कॉन ये गॉड बट बोनाफाइड नहीं है, कभी कुछ चलता रहता ना, चलता नहीं रहता, बहुत कॉमन है. इंटरनली क्या है, आउल बाउल सची बेकी चूड़ा धारी प्राकृत सहजिया, अरे 13 संप्रदाय बन गए थे एक टाइम पे, उन्होंने इंटरनली गंदा कर दिया था भक्ति की धारा को. तो ऐसे कंसेप्शन अभी भी चलते रहते हैं दिमाग में कहीं ना कहीं पे.
कुछ ना कुछ कंटामिनेशन आती रहती है। कृष्णा वेस्ट, इस्कॉन के अंदर आजकल एक कंसेप्ट है कृष्णा वेस्ट। इट्स अ बिग ब्लंडर इन इस्कॉन, सब भसड़ इन इस्कॉन एक्चुअली। कि आप भगवान कृष्ण को हैट पहना रहे हो, गॉगल्स पहना रहे हो, गले में हाथ में घड़ी दे रहे हो, जीन्स दे रहे हो। तो श्रीला गुरुदेव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आके भक्ति की धारा को भी प्यूरिफाई किया। कैसे? बाय प्रोटेक्टिंग द गौड़िया धारा, भक्ति विनोद धारा, प्रोटेक्टिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद धारा from external people and definitely from internal people. I remember one time sitting at Radhakund at 4:30 in the morning, waiting for the sunrise so that I take bath in the month of Magh, January. That time one Dadiwala guy, one devotee, he was sitting next to me and he asked me who you are. What are you doing here? So I told him I'm a disciple of Srila Gurudeva. Then he said, as long as Srila Narayan Maharaj was here on the planet, he had protected so many people from going to Babaji and here and there. In his presence, he was giving so much of Rasa Tattva and so many things which actually a jiva wants to hear or listen. अरे कब तक सुनोगे यार, हम आत्मा है। और कब तक आदमी ये सुनता रहेगा कि वो आत्मा है? उसको रियलाइज करने के लिए कि वो आत्मा है, उसको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि अगर वो आत्मा है तो वो क्या है, कौन सी आत्मा है। अगर वो ये शरीर नहीं है तो क्या है? मैं बोलूं कमल, तू इस दुनिया में कुछ करने के लिए पैदा हुआ था। तू बोलेगा हाँ ठीक है, मुझे भी पता है मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ, लेकिन क्या करने के लिए पैदा हुआ था ये बताओ। अरे नहीं यार, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ था। अरे हाँ भाई, मुझे पता है मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन क्या करने के लिए पैदा हुआ? भाई तू बस कुछ करने के लिए पैदा हुआ था। तो कैलाशवासी बोलेगा यार क्या करने के लिए, ये तो बता दे भाई। मैं समझ गया कुछ करने के लिए पैदा हुआ था मैं, लेकिन क्या? तो वो जो क्या की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वही अंडरस्टैंडिंग है रागमाल की। रागानुगा भक्ति जो है, इसके बारे में कोई नहीं बात करता, लेकिन रागानुगा जो भक्ति है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए। क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी का गोल क्लियर नहीं है ना कि राधा दास से हमें अटेंड करना है, तब तक हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम लोगों को भक्ति में नरिशमेंट नहीं मिलेगी। वो भक्तों के साथ हाथ पकड़ के नाचना, वो पहले 4-5 साल अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या? वो मंदिर में जाके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना 5, 6, 7, 8 साल, 10 साल अच्छा लगता है। But I'm telling you, everything become monotonous if your chanting is not good, if your reading is not good, your internal cultivation is not good. You all are in Krishna consciousness for more than 10 years. You tell me your enthusiasm has gone down or not? हाँ या ना? आनंद, what do you say? Kamal Roy, what do you say? यस रोज, पहले तो सही ऊपर उठा था, फिर डाउन हो गया, अभी फिर से इट इज कमिंग टू ट्रैक डाउन। प्रभु जी, ऑल टाइम डाउन, ऑल टाइम लो। And Khushi, what do you think? Am I right or wrong? Absolutely right, प्रभु जी। भुक्ति मुक्ति वाली कंडीशन, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग। Life become a pendulum. कभी भोग, कभी त्याग, कभी भोग, कभी त्याग। पर प्रभु जी एक स्टेबिलिटी जब थोड़े टाइम तक आ जाती है तो वी गेट बोर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाट माय एक्सपीरियंस, मैंने बहुत ज्यादा हेयरिंग कर ली, बहुत ज्यादा रीडिंग कर ली, तो मुझे रहता है अब बस बहुत हो गया, थोड़ा तो चल, थोड़ा चेंज चाहिए। नरिशमेंट नहीं मिला ना सोल को। क्या नहीं मिला? नरिशमेंट नहीं मिला सोल को।
जो स्टेबिलिटी की तुम बात कर रही हो ना, वो स्टेबिलिटी पता है क्या है? वो शेर के मुंह में खून लग रहा है। यानी कि हम लोगों को अब भक्ति की ऐसी आदत हो चुकी है, हाँ, कि अब हम लोग भक्ति को छोड़ के नहीं रह सकते। हम भगवान के बिना नहीं रह पाएंगे। हम वैष्णव, ड्रग्स की तरह हो गया प्रभु जी, ड्रग्स की तरह। हाँ दृष्टि हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों को जब तक ये नहीं पता चलेगा ना कि हमारा स्वरूप क्या है, या हमें क्या, हम हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, या मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, या मुझे भक्ति क्यों करनी है, जब तक हमें ये सब नहीं पता चलेगा, तब तक क्या नहीं होने वाला, तब तक वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड कंप्लीटली। और ये जो सेटिस्फेक्शन है ये जब भी आएगा जब हमको पता होगा कि हम लोगों का स्वरूप क्या है। एनीवे, लेट मी कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज ओनली दिस कि Srila Gurudev has protected so many devotees from going here and there, and Srila Gurudev also has protected so many disciples, so many ISKCON devotees to go here and there. There were so many people who left Krishna consciousness, Prabhupada disciples especially. Gurudev went to the West for the first time. He went one after another to each one of them. Some of them were sannyasis who left sannyas ashram. He begged them. He brought them in, then again reinitiated them into sannyas. Some of them they have joined him back again. Some of them who had left Krishna consciousness again joined back. So in this way, we can all see that the contribution of Srila Gurudev is so much in the mission. So Gurudev is a merciful glance of Krishna. This is the realization of today's lecture. One of the lectures I was hearing, Srila Gurudev is saying, I used to rise early in the morning at about 4 a.m. and I would always stand Hare Krishna. I was always worshipping Lord Krishna and Lord Rama. I was very kind to all the animals, trees, creepers, and grasses. From the beginning of my childhood, I was very fond of reading and studying the Vedas, Upanishad, Ramayana, and Mahabharata. I was always a very religious person with a great taste for study. He says, I don't remember when was the time when I got up and the sun already was up. Even he was sick. Sorry, he used to get up at 4 o'clock. So, that's how his father cultivated him always. So, it's a very good teaching for all of us because we are parents also. So, how we have to cultivate our parents. This is another very good example for all of us. How can we cultivate, our children? But anyways, we cannot artificially become a Ragmarg devotee. It comes with time, it comes with chanting, it comes with so much of dedication and devotion. What the contribution of Srila Narayan Maharaj is there in the life of Srila Prabhupada is that he was the one who pushed him to take sannyas. Because Srila Narayan Maharaj was already sannyasi, a young sannyasi, 32, 33, 34 years old. And Srila Prabhupada was 60 years old. And they were very good, very close buddies actually, very close friends. Srila Prabhupada was very expert in making sabzis. And Srila Gurudeva was very expert in making chapatis. So he used to make chapatis for Srila Prabhupada. And they both used to live sometime together in, mostly in Keshavji Gaudiya Math. Because Bhakti Pragyan Keshav Maharaj was always a very close friend of Srila Prabhupada. So they got initiated. He got initiated on the day of Vishwarup Mahotsav, Srila Prabhupada. And when Srila Narayan Maharaj, when Srila Prabhupada left, Srila Narayan Maharaj
used to receive letters from him. Uh, and he is the one who sent him the first Mridanga. All the books of Srila Prabhupada was sent by Srila Gurudev. The Srila Gurudev also had sent one time pedas, which pedas, he distributed to everybody, and everybody was astonished. Oh wow, Swamiji Maharaj, what is it? And Prabhupada one time also told Srila Gurudev that I want to have a picture of, when at the time of departure of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he asked for the photograph of Bhakti Pragyan Keshav Maharaj because he wanted to put or keep the picture of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj in the altar. But then, they somehow couldn't send, and it didn't happen. I would like to share some of the memories of Srila Gurudev with Srila Prabhupada. This is on page number 713. 13. It is just like, because you are my own, that's why I'm sharing with you guys. And these lectures are not in public, so I'm not. My Gurudev and I were present on the day of Abhay Charan when the Prabhu came again to the Keshavji Gauriya Math in 1955. We embraced him and he embraced us. Before coming, he had been successful with his pharmaceutical business in Allahabad called Prayag Pharmacy. And it was very famous. Many important personalities of India, including the Prime Minister, were customers in his shop. Later on, however, he had to sell it. Then he traveled to the important cities of North India, such as Delhi, Kanpur, Lucknow, Agra, Jhansi, Mathura, and other towns to sell the medicines he had made from his own formulas. Kunja Bihari Prabhu, a senior disciple in the Math, was specially devoted to him during this time. He helped to carry his bags and also to bring him prasad while he worked. After a while, this business also came to an end, and Abhay Chandar Prabhu gave up his household life and all his possession in Calcutta. He again came to Mathura, and this time without belongings. He bought a medical formula for treating ringworm, which he distributed to the shopkeepers, store to store, but sales were not good. He was living in room he had rented by Yamuna in Huliwali Gali near Bengali Ghat. He had been there 3 or 4 days when I went to see him, and I told him, Prabhu, why are you staying here? He was very humble and did not want to impose himself on us. So I forcibly took his luggage and told him, I will not let you go anywhere else. We are here, we are your sons, you are our Gurudev's god brother and are very dear to us. We want to take care of you. I will not allow you to stay here, separate from us. I bought the brahmacharis, Kunji Bihari Prabhu and Sheshai Prabhu and some others. We took what few utensils he had and brought him to live in our mud. I requested him, please stay here with us, preaching Bhagavad Gita, writing, and so on. I know that no one is assisting you now. I want to personally serve you. Please live here forever. We never want you to leave. He became so glad. I gave him a room adjacent to mine. I have been to this room where Prabhupada used to live. His room was there, pointing to the room, one door from the kitchen, and my room was there. There were only 2 rooms, then his and mine. At that time, there was no mandir in our Keshavji Gauriya Math. We had very little facility to offer him because nothing was there in our Math. There was just one bathroom, but still, we were very easily able to live peacefully and accomplish everything we had to accomplish. At that time, he also had nothing to show to others that this is mine.
He had only his body and Atma, no paisa at all. He only had some copies of his Back to God magazine, his Gita, and 3 or 4 volumes of a Bengali Srimad Bhagavatam, which are now preserved in our library. He had no bedding and no extra boxes of personal belongings. We gave him one small room and many large books. Sripad Narasimha Maharaj, one of his godbrothers, and I donated some Sanskrit and Bengali books to him. There he began to write many English translations and articles. Day and night he would stay in his room and do this, and he also chanted a great deal of Harinam and very beautifully sang bhajans. We did not know when he ever took rest. He slept only a short time in the morning, because all throughout the night he was awake, and throughout the day also. He became so pleased with the arrangement of staying with us, and our Guru Maharaj also became pleased when he was informed of this. He continually requested Abhay Chanan Prabhu to give Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam classes. Usually not many devotees attended because only few of us lived in mud. Then we were just beginning the Keshavji Gaudiya Mutt temple. So we had just 5 or 10 persons, but very high class learned gentlemen from Mathura would often come to hear him speak. I know I know then as a good Kirtaniyas in the Gaudiya Mutt in Bengal and Uttar Pradesh, so I would perform Kirtan. Prabhu would lecture, explaining in his discourses the word by word meaning of each verse under discussion. Very erudite scholars are attracted by his classes. During the time, he would also give Chaitanya Charitamrita classes in the evening to those of us who lived in the Matha. His devotion for Sri Chaitanya Mahaprabhu and his pastimes was very deep. Later on, after he took sannyas, he often gave these classes in English, even though almost no one in Math could understand English. He would say that he was practicing. I would sometimes joke with him saying, "Oh, you may try to be responsible for our children and wife, but they are rejecting you." So one of his son was not very favorable, and another was somewhat favorable, but not wanting to serve him. So I would say, Prabhu, why not take more service from all of us? Please do not go back there. I will beg from door to door and arrange to get you rice and other items. When Prabhu first came to Mathura to stay with us, he had an enlightenment which he humbly and silently tolerated. Because he was expert in medicines, he always used Ayurvedic and homeopathic remedies when necessary and avoided allopathic treatment. I was fortunate that he confined me in me, saying, I do not have faith in any doctor. If they demand to operate, I may die. I told him that he would not die. He would too much important he would do too much. He had too much important seva to do. He agreed and said that he was very determined to fulfill his Gurudev's order to preach all over the world. I said that I knew of a bona fide doctor here in Mathura who had cured others. He let me take him there, and I stayed by his side during the entire operation. I hesitate to mention these details because it may sound as if I was helping him. Actually, I know he was bestowing his mercy by allowing me to perform intimate service. We would often visit each other's room and sometimes we would joke together about various topics. He was very fond of joking. And when he was very fond of joking, and when he would laugh, it was very sweet. He joked in a especially delightful way with a slightly playful smile. We also had many philosophical discussions together, speaking about such topics as Prahlad Charitra, 10th canto of Srimad Bhagavatam. We read many scriptures together, and he would deeply discuss the matter he wrote about in the Gaudiya Patrika. Sometimes we would have talk with 1, 2, 3, or 5 disciples of many by Gurudev in my room.
There were also some big officers and other important gentlemen who came to hear him speak, and they would say, "Oh, Abhay Charana Babu is such a learned and advanced person." Everybody would glorify him. Prabhu was very enthusiastic about cooking, and he often declared that all the Gaudiya Vaishnavas would be expert in cooking for Krishna. During the many months he stayed in Keshavji Mutt, the two of us would perform Sundar Arti together each evening. He would always play the Mridanga very expertly, and I would play the Kirtals and sing. He liked my singing very much and always requested me to lead the Kirtan. Someone asked me, why doesn't Prabhu sing? He has a beautiful voice as well. I replied, yes, surely he does, but there are times he doesn't sing because he is experiencing intense devotional feeling and weeping. Whenever Prabhupada used to sing, Nikunj you know, Rati Keli Siddhyaye, Yayali Viru Tirapekshaniya, he immediately used to get choked and then he's not able to speak further. Or, he was getting choked when he stopped praying to his Guru Maharaj. And there were so many times. So that is the reason he was not all the time leaving. So accepting sannyas, he had been the manager of Bengal Chemicals and was so expert that he had arranged another company himself, but there were problems. So he had come to Allahabad and manage a very big medical shop, but after some time also had difficulty and he then engaged in a little more business, but Krishna would not allow him to continue. Then he came here. So we once talked together in 1959, sitting side by side. Prabhu said, when I first met Srila Prabhupada, when he gave me the initiation, he told me that I would preach in English in Western countries. He also told me this over 20 years ago in Kolkata. That which I feared has come on my head, and now I see that I cannot successfully remain in business. I replied, please do not try for this anymore. You're not a person to do anything associated with the worldly business. Krishna and Gurudev want you to preach in Western countries. So you have such an important work to do, and you are so much qualified. So we laughed together about this in a friendly way. Guru Maharaj and Abhay Prabhu were bosom friends. They had lived and served together. Both were intellectual giants and very erudite person from high class families. So I now encourage him to accept sannyas from our Gurudev and then go to preach in Western countries. Then when my Guru Maharaj later arrived from Navdeep, I told him, Abhay Prabhu is your friend. He can obey you because you are an elder. Gurudev was sannyasi and Prabhu was in Grihasthavesh. Earlier when I had returned to Gurudev that Pujyapad Abhay Prabhu was staying here with us, he told me, he is my bosom friend. Show him all respect, give him all the facilities. I had known him since 1947 and then realized how highly qualified he was. Pujyapad Srila Sridhar Maharaj, Shoti Maharaj, Guru Maharaj would always give him great respect and hear from him, even though he was a householder. At this time, therefore, I requested my Gurudev to apply some pressure so that he would take sannyas. Gurudev then called him and said, Narayan Maharaj and all other boys are encouraging you to take sannyas. I also support this idea. Do not hesitate to take a renounce order. You are so qualified. Please take sannyas now. It will be very beneficial. Abhay Chandravarti Prabhu thus agreed to accept sannyas, and the ceremony was held the very next day. That day was the auspicious Vishnu Mahotsav. Prabhu asked me, how should I prepare? I told him, don't worry, I will arrange everything. I prepared Bahiravesha, that is Sannyas Dhoti, Uttariya, and then with my own hands,
I taught him how to wear these, and then I performed the fire yajna. Akinchana Krishnadas Babaji came, and Sheshai Brahmachari Kunj Bihari Brahmachari Parijatak Maharaj and other persons were also present. Now most of these devotees have departed. Sanatana Prabhu took a sannyas with him, and after which he became Bhaktivedanta Muni Maharaj. He was 90 years old and had said to him, "If you agree to take sannyas, then so shall I." He is also no longer here, having joined the eternal service of Krishna. I recite the Yajna mantras and perform the ceremony. Krishna Babaji Maharaj Prabhu's intimate God brother and friend chanted Hare Krishna continuously from 8 a.m. till 3 p.m. in a most sweet and deep manner. My Gurudev then gave Prabhu the sannyas mantra. The sannyas name we gave was Swami. Because जो संन्यास के बहुत अलग अलग नाम है. भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी या स्वामी नहीं है. भक्ति विज्ञान केशव महाराज. B.V. Govind Maharaj. So Swami was the title given. So this is one of the bona fide sannyas name. It means the controller and the master. So Bhakti Vedanta had already been awarded in Calcutta by some of his god brothers, and Maharaj is a formal ending for this in the renounced order. So this name Swami was just fitting because Srila Bhakti Vedanta Maharaj became the controller of many, many jivas hearts due to his being strong and faithful to his Gurudev. This is why we affectionately call him Swamiji, not in any common way, but showing the great respect. After the ceremony, Gurudev requested Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj to speak. He spoke in English, although almost everyone present could not understand that language. He explained that just as this time he remembered his Gurudev's specific order to preach in the English language. He said, I feel fortunate to accept sannyas from my god brother Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, Keshav Goswami Maharaj. I have known him for a long time and he is my close friend. He is a very bona fide disciple of our Jagat Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. इसलिए यहाँ पे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज गोस्वामी लगाया गया है because he was a Goswami, you know. Otherwise इनका जो नाम है भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज है. ठीक है, स्वामी और गोस्वामी बाद में लगाया जाता है. जैसे अभी मेरे दोस्त है उसको संन्यास मिला तो his name is भक्त बांधव ऋषिकेंद्र. अब हम लोग उससे आगे लगा रहे हैं स्वामी महाराज, you know. Anyway, he has kindly given me the sannyas order, and Srila Narayan Maharaj and Srila Muni Maharaj has also given me inspiration to do this. The order of sannyas means to preach the mission of Srila Chaitanya Mahaprabhu and mission of the Guru everywhere. My Gurudev instructed me to preach in English in Western countries. That is why I am writing English articles and books. I pray to Krishna, Gurudev and all the Vaishnavas that they give me the power to preach his mission all over the world. Experts from his speech and description of his ceremony were printed in news article in our Bhagavad Patrika. The well-known photograph of our Gurudev sitting between Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj and Bhaktivedanta Muni Maharaj was taken on that side. Kunja Bihari Brahmachari was formerly a wealthy devotee and had previously helped build our mutt financially. So now he gladly donated the 5 paisa he had saved from a photographer's snapshot. And thus today we can all honor this sannyas portrait. It was a special privilege for us to participate in assisting Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj in accepting sannyas. For the next 3 days after the ceremony, Krishna Babaji Maharaj stayed together with him in his room. They were especially close and confidential with each other. After this, Srila Swami Maharaj went to Agra, preached in a program he had arranged. He was always coming and going engaged in Guru Seva. We kept his room open for him for the next 5 years. During that time, he wrote
some of his books like Easy Journey to Other Planets. Here, in 3 volumes of Srimad Bhagavatam were not printed yet, so he continued writing and editing them, and the manuscript were then given to the press in Delhi and gradually published. He was also writing Back to Godhead and other publications, and he had done some translation before in the Calcutta and Allahabad, but here he was easily able to concentrate and thus accomplish so much. Anyways, so the ultimately what I wanted to say is that Vaishnavas are very merciful and very important and very essential. We should never see dosh in them, and we should always try to see whatever good we can learn from them. There are so many things which we should discuss, but the most important thing about Guru Tattva is that whatever the mercy we have right now is Guru Tattva's mercy. When we talk about Gurudev, 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 ज़्यादा Gurudev, Gurudev करने वाले जो लोग हैं ना, they become inimical towards their Guru. क्यों? Because they have a dosha drishti. So after some time, what they see? अरे गुरुदेव तो पेप्सी पी रहा है, गुरुदेव लिम्का पी रहा है, हाँ गुरुदेव तो 4 बार पोटी जाता है, गुरुदेव तो 3 बार खाना खाता है, गुरुदेव तो रसगुल्ला खाता है, गुलाब जामुन खाता है. So this kind of mentality they automatically develop. So this kind of mentality would never ever help anybody. है ना? तो ये जो होता है गुरु तत्व जो होता है, जब हम गुरु तत्व की बात करते हैं तो फिर वो हमको सब तरीके के एक्सीडेंट से बचाता है. गुरु तत्व क्या करता है? गुरु तत्व हमें हर तरीके के एक्सीडेंट से बचाता है. कभी कभी किसी की रिश्ता गुरु में होती है, किसी की रिश्ता शिष्या गुरु में होती है, किसी की रिश्ता वर्त प्रदर्शक गुरु में होती है. बट इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स अ लॉट इज दैट गुरु तत्व शुड बी served. Guru Tattva should be respected and Guru Tattva should be recognized. हरि बोल. कुछ बात करनी है, कुछ कहना है किसी ने? प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि ऐसा इट्स वैलिड फॉर इनिशिएटेड डिवोटीज और फॉर एवरीवन. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इनिशिएटेड नहीं हूँ, इफ आई एम फॉलोइंग समबडी एंड बहुत यकीन के साथ उनको फॉलो करती हूँ, महाराज की सारी बातें सुनती हूँ, फॉलोइंग एवरीथिंग, तो क्या वो चीज हम पर भी वैलिड होगी? क्योंकि ऐसा बोला जाता है, जैसे टेम्पल में हमारी क्लासेस होती थी गुरु तत्व के ऊपर, तो उसमें हमें बताते थे कि जब तक गुरु हमें पर्सनली नहीं जानते तब तक हम उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं. प्रॉब्लम ये तो है, मैं कहता रहा हूँ गुरु जो है ना, गुरु और गुरु तत्व में बहुत फर्क है. अब देख गुरु के अंदर क्या प्रॉब्लम, ये तो डेफिनेटली बात है कि जो अब तक का आपका जो सिस्टम है गुरु वाला, वो थोड़ा ब्लंडर है. पहले गुरु जो है वो डिसाइपल्स नंबर्स अचीव करने के लिए नहीं बनाते थे, वो कृपा देने के लिए बनाते थे. वो हर व्यक्ति बहुत केयरफुल रहता था कि वो अगर किसी को शिष्य बना रहा है तो उसका उससे संबंध होना जरूरी है. ठीक है, लेकिन मैं संबंध की बात में आती है तो ऐसा कि अभी हम लोग बहुत डिग्रेडेड हैं. पहले के टाइम में देखो, एक गुरु की एक शिष्य ने 1 साल तक पॉटी साफ करी, वो उसने मल को साफ किया, उठा के फेंका उस स्थान से, उसको साफ करता था स्थान में. इतने निष्ठा तो आजकल किसी में दिखती ही नहीं है. दूसरी चीज ये जो समझने वाली है वो ये है कि उसने वो सेवा करके गुरु के साथ रिलेशन डेवलप किया. कल मेरा एक दोस्त है, परसों उसका फोन आया था, नटखट कृष्ण प्रभु है, यूके में रहते हैं वो भी. उन्होंने बोला गुरु से प्रेम कैसे बढ़ेगा? मैंने बोला कि भैया बीवी से प्रेम कैसे किया तूने? तो कहता कुछ नहीं, बस उसी बातें मान के. बोला बस खत्म बात. गुरु से उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके और गुरु को सर्व करके ही हम लोग गुरु से प्रेम कर सकते हैं. लेकिन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है कभी कभी बहुत नैरो हो जाती है when they are talking about either
दीक्षा गुरु और केवल दीक्षा गुरु। लेकिन वी फॉरगेट कि दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु नहीं होते, गुरु तत्व होता है। समझ में आया? तो अगर तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं है अपने गुरु के साथ तो तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो अपने बारे में बताऊं तो अगर मेरा तो संबंध नहीं है ना किसी के साथ तो मैं उसकी हरी कथा भी नहीं सुन सकता। I get your point. मतलब if I don't have a संबंध with any Vaishnava, I cannot even hear his हरी कथा. But to speak of taking diksha or surrendering myself to him. Are you getting my point, Khushi? Yes, Prabhuji. But you know what you have to do if but Prabhuji, then what, मतलब जो usually अभी जो आजकल अब हम देखेंगे, अगर हम पूछते हैं ना, कोई nobody asks about शिक्षा गुरु, everybody asks about to whom you are initiated, मतलब वो दीक्षा गुरु को ही consider करते हैं। अगर ऐसे कोई पूछता भी तो वैसे तो कोई पूछे कि who is your guru महाराज, तो it's like asking a woman कि who is your husband. It's a very very wrong statement, in one way. So in that case, तो the answer should not be given actually, because हरि भक्ति विलास में लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी को भी व्यक्ति को ना अपने गुरु का नाम, अपने स्वरूप का नाम, अपनी इष्ट का नाम और अपनी जप माला को नहीं दिखाना चाहिए और अपने मंत्रों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये 5 चीजें हमेशा हिडन रखी जाती है। Prabhuji, can you please repeat? I'm pen downing. पेन डाउनिंग दैट। पहला चीज बताया कि गुरु का नाम, दूसरा मंत्र दीक्षा, ठीक है, तीसरा स्वरूप, चौथा जपमाला और क्या बोला, और इष्ट का नाम। इष्ट मतलब कौन सी मंजरी के अंदर आपकी सेवा है, किसके अंदर सेवा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो प्रभुजी, ये ये चीजें एक्चुअली में रिवील होती हैं, मतलब यार टाइम आता तो होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं गुरु का नाम और दूसरा वाला क्या बताया था आपने, दीक्षा मंत्र? हाँ, अच्छा, दीक्षा मंत्र, तीसरा स्वरूप और चौथा जपमाला, पांचवा आपने मंजरी इष्ट इष्ट का इष्ट। नाम। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है जी। ये आपने पहले भी बताया था, मेरे को याद है, शायद आई थिंक लास्ट ईयर, पता नहीं कब आपने जब क्लास लिया था। यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस, मैंने कहीं लिखा होता फिर मैंने लिख लिया इसको। यस प्रभुजी, बताया था गुरु तत्व के बारे में, जब हमने वो रीड करा था ना लास्ट ईयर, तब बताया था प्रभुजी ने। हाँ, इट्स लाइक वन शुड हाइड वंस इष्ट देव, वंस गुरु, वंस मंत्रा, and one should hide his japamala. बहुत इम्पोर्टेंट है यार ये, ठीक है। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और, जैसे प्रभु जी फॉर एग्जाम, अब मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मुझे किसी से दीक्षा लेनी है, अब पर मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, पर वो तो मुझे जानते ही नहीं ना। हाँ, बट वो आपको जानते नहीं है। गुड, आप समझे नहीं, वो तो कोई हमारे जिस टेम्पल से हम कनेक्टेड होते हैं वो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। प्रभु जी, जो गुरु महाराज होते हैं वो हमें थोड़ी ना जानते हैं, ना हम उनसे मिलते, पर हम पढ़ के सुन के उनके बारे में इंस्पायर्ड हो जाते हैं। देखो, 2-3 चीजें होती है। ये देखो, जो तुम्हें इंस्पिरेशन और प्रेरणा मिली है ना, ये गुरुदेव के बारे में नहीं, गुरु तत्व के बारे में ही मिली है। यू नो, ये गुरु तत्व की मर्सी ही है आपके ऊपर। If you're taking Diksha, Yes. goes from any XYZ Guru Maharaj, whom you don't have a relationship with, you have to Yes. still understand that I am not surrendering to him. I am surrendering to Guru Tattva. So because दीक्षा लेने से क्या हो जाएगा कि तुम परंपरा में जुड़ जाओगे, ठीक है, बाकी Yes. शिक्षा से भी लेते रहो। देख, अब एक बात बता, दीक्षा से तेरे को अल्टीमेट नरिशमेंट थोड़ा मिलने वाली है, नरिशमेंट तेरे को सेवा से मिलेगी ना। Yes, प्रभु जी। राइट,
जो नरिशमेंट मिलेगी वो सेवा से तो मिलेगी। वो सॉरी, जो नरिशमेंट मिलेगी वो तेरे को शिक्षा से मिलेगी। जो भी शिक्षा तू मेरी क्लास में लेती है या बिमला प्रसाद मेरी क्लास में लेती है, अल्टीमेटली तेरे को वही सुन के मजा आएगा, यू नो। ये यस एब्सोल्युटली राइट प्रभु जी। तो यही एक बात है जो अंडरस्टैंडिंग की है, और इस बात को समझना पड़ेगा कि गुरु तो फिर हम लोग अभी फॉर्मेलिटी के लिए ही बनाते हैं। और मेरे गुरु महाराज कहते हैं गुरु तो इसलिए है कि वो आपको मंत्र दे देगा ताकि आप विग्रह सेवा शुरू कर दो, और जब माला करना शुरू कर दो, ताकि अपना जब करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे जो अनर्थ है वो खत्म हो जाए। समझ रहे हो? अल्टीमेट तो शिक्षा है, वो शिक्षा से कुछ है। खत्म होंगे मतलब बस। क्या मैं कह रही हूँ, प्रभु जी पता नहीं कब खत्म होंगे ना टास्क। अनर्थ तो खत्म होने वाले नहीं है। अगर तुमको लगता है कि अनर्थ खत्म होंगे तब तुम दीक्षा लोगे, तो तुम्हारा बहुत बड़ी गलतफहमी है। नो नो प्रभु जी, आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दिस। मेरा मेरा कुछ और पॉइंट था और वो क्लियर हो गया। हो गया ना? चल ठीक है। अगर सरेंडर करना भी पड़े किसी ऐसे गुरु को जिनके प्रति तेरी निष्ठा नहीं है, तो ये समझ के रखियो कि तेरे अल्टीमेटली शिक्षा ही बचाने वाली है भविष्य में। ठीक क्या है? क्या दोबारा बोलो प्रभु जी, शोर बहुत है। अगर किसी ऐसे गुरु से दीक्षा ले क्या रहे हो, प्रभु जी, कैन यू प्लीज रिपीट? मैंने हाँ बोला जी। अगर तुम किसी गुरु से दीक्षा ले रहे हो जिनके प्रति तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तो ये समझ लेना कि तुम गुरु के नहीं, गुरु वर्ग से जुड़ने के लिए उस गुरु का शरणागत हो रहे हो। और अल्टीमेटली जो तुम्हारे को बचाएगा जीवन में, वो तुम्हारे को शिक्षा ही बचाएगी। ओके प्रभु जी, एक मिनट पेन डाउन। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। ये ना आपने बहुत बहुत ही मतलब कह रहे हैं ना, बहुत क्लियर चीज बोली। क्या बोली? थैंक यू सो मच बहुत प्रभु जी। आवाज जो करो। आपने मुझे अभी ये चीज क्लियर बोली ना कि आपको अगर, हरि बोल हाँ, सुन रहा हूँ। प्रभु जी, जैसे अभी आपने ये चीज बोली कि अगर हमें कभी जिसमें हम गुरु के हम सरेंडर नहीं है, अगर हमें उससे कभी उनसे कभी दीक्षा लेनी भी पड़ी तो हमारी शिक्षा ही काम आएगी हाँ जब हमें नीड होगी, इन अ हाँ। नीड। नीड ऑफ एन आवर यही है शिक्षा। यस प्रभु जी। ठीक है? एनी डाउट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम? नो प्रभु जी। No, Guruji, it's a wonderful class. Wonderful class. Very nice. बहुत अच्छे से सेवा आपने दी है। वो एक क्वेश्चन हाँ हाँ। मीठा इसका आंसर दे दिया ऑलरेडी, मगर एक बार और क्लैरिफाई करो कि जैसे आपको पता है हमारे गुरुदेव कौन है। अब गुरुदेव ज्यादा बोलते नहीं है और ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते नहीं है। गुरु महाराज के लेक्चर सुन रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, और आप भी लेक्चर सुन रहे हैं। और गुरु की कृपा अगर चाहिए या गुरु से इंस्ट्रक्शन चाहिए कुछ डायरेक्शन के लिए, तो वो फिर कैसे मिलेगी या कैसे प्राप्त होगी या क्या होगा उसका आगे? मतलब अभी जैसे जैसे कई बार होता है ना कि गुरु महाराज ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी होगी ये करो, एंड ऑब्वियसली ही नोज, देन इट जस्ट बिकम्स इजियर ना कि लाइफ में अच्छा इस पे फोकस करना है कि ऐसा गुरुदेव ने ये बोला। ऐसा नहीं, बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं बताता हूँ। मैं अपना अच्छा एक्सपीरियंस बताओ। बताता हूँ। 2013 में नहीं, 2014 में हमने लैंड खरीदी जहाँ पे हमारा गुरुकुल कैंपस है अभी। और हमने 12 घंटे का कीर्तन ऑर्गेनाइज करवाया। कार्तिक का महीना था, और गोपाष्टमी का दिन था। गुरु सचिदानंद महाराज आने वाले थे और 12 घंटे का कीर्तन था। बहुत सारे सन्यासी आए थे जिन्होंने कीर्तन किया था। वी आर नथिंग ऑन द लैंड, कंप्लीटली एम्प्टी, खाली बिल्कुल। और मैं उन दिनों में बहुत ज्यादा भजनानंदी हुआ करता था। अब मुझे ना लीला पुरुषोत्तम प्रभु आए, और लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने बोला, तो रघुनाथ, आर यू गोइंग टू कीप द बियर्ड?
ये कार्तिक का नियम साधन चल रहा है. Okay, what to do, what to say, and then he remained quiet. I immediately called Mukund Datta Prabhu. And I said, Prabhuji, you have given me instruction to shave on every Purnima. So what should I do? Because Leela Purushottam Prabhu is not very happy seeing me having beard. He said, Dekh, look, I am your Shiksha authority. I am giving you Shiksha for your spiritual upliftment, spiritual alignment. But he is your Seva authority and you're serving under him. So he is also one of your authorities. He is one of your gurus also. So you should follow what he says to you. And by keeping beard will not give you those results which will be given to you by following him and his instruction. Who is my Guru Maharaj? Srila Narayan Maharaj. What his instruction is? That I am not supposed to shave for 4 months. Or maybe Vishnu Mahotsav I can do and Vishnu Mahotsav to Kartik Purnima. Who is my Seva authority? Mukund Datta Prabhu, who says ki nahi, there's no need to keep your beard for 2 months or 4 months. Do it every Purnima. On the other hand, the third authority comes to me and says that you have to shave on Gopa Ashtami Day because we have a festival and you are the marketing person, one of the representative or one of the, the face of Gurukul, one of the managerial providers, so you're the manager of Gurukul. Immediately I got shaved, Prabhu. I've shaved myself immediately. Because that day I understood one thing, my Guru Maharaj is not going to get alive again to come and tell me what is good and what is bad for me. Automatically Gurudev will send his associates and reveal whatever is necessity or important is for me, or important for me. You getting, Prabhu? Sometimes if your Guru is not able to give you instruction, your maybe Shiksha Guru or any of the representative of that particular Guru, or above all, Guru Tattva will give you the instruction. Following this then, आपने पहले mention किया था क्लास में कि you get to know your Swarup and you get to know your service and you get to know your who you are in spiritual world. तो वो फिर उस stage पे कैसे पहुंचा जाए और क्या किया जाए या कैसे तप किया जाए या what to do for that? तो 16 माला करने वाले बंदे को उसका स्वरूप कभी रिवील नहीं होने वाला. Okay. ठीक है. और प्रपंचों में फंसे हुए व्यक्ति को भी नहीं मिलने वाला स्वरूप. स्वरूप अगर याद करना है तो बहुत इंटेंसिटी के साथ जप करना पड़ेगा. बहुत इंटेंसिटी के साथ प्रभुपाद की किताबों का श्रवण, वैष्णव आचार्यों की ग्रंथों का श्रवण और अध्ययन करना पड़ेगा. वैष्णव भजन गाने पड़ेंगे उनके मतलब के साथ. अच्छा. मैंने ये सब शुरू किया था, बट आई कुडंट कंटिन्यू. अदरवाइज राधा कृष्ण प्राणम हो रहा जुगल किशोर से ही उस पर्टिकुलर भजन के अंदर ही हमने 6 से 7 भगवान की अलग अलग लीलाओं का चित्रण बनाया था, पिक्चर बनाई. और वो अलग अलग पिक्चर के ऊपर अलग अलग मेडिटेशन थे कि श्यामा गोरी अंगे दीवो चंदनेर गन चामर डुलाओ हेरी मुख चंद. तो क्या ये सब मेडिटेशन तो है कि when will I be able to put the chandan on the body of the divine couple or Radharani. So you will have to read scriptures, you will have to intensify your bhajan, you will have to minimize your prapanch, and then one day definitely
if you have Sukriti, the Guru Tattva will reveal the Swarup to you. Okay. And the Seva will be revealed to you. And then your name will also be revealed to you. Okay. Thank you. Yeah. And why I'm confident? Because I'm confident. You know, I'm confident about it. Very confident about it. Very sure about it. मतलब कोई अगर मुझे बोले कि you're being stupid, कि बाबा जी लोग क्या कहते हैं कि नहीं, it cannot be given to, it can be given only by Guru. But no, Guru Tattva gives. Guru Tattva gives you everything. Sweet. Okay, Prabhu. Thank you so much. Get you? Thank you, Prabhu. Thank you so much. This is very helpful. No doubt, no question, no problem. No question. Sure. No problem. Thank you. Whatever discussion we had, we pray to Radha Shyam Gaurada Krishna Balaram Srila Gurudeva and the Koti Vaishnava to give us the blessings so that whatever we have discussed, we can imbibe in our life, and with our mind, words, and action, always serve divine couple while remain situated in our Swarup as a servant of Krishna and attain the goal of life, that is Radha Dasan. Radha. Vanchakalpatruvaśya कृपा सिंधु भवेच्छ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. जय गौर भक्तवृंद की जय. श्री रघुनाथ दास की जय. हरे कृष्ण. Hare Krishna. श्रीला गुरुदेव की जय.